हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एसआर एकेडमी 2.0 की इस ब्रांड न्यू मास्टर क्लास में। आज हम एक ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो क्लास 11, 12, बीपीएससी टीआरई 4.0 और पीजीटी फिजिक्स जैसे हर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है। बात हो रही है ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल की। ये एक ऐसा हाई वेटेड चैप्टर है जहां से सीधे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम कवर करेंगे फील्ड एंड पोटेंशियल, स्फीयर्स और शेल्स, वेरिएशन एंड करेक्शंस, उसके बाद एक सॉलिड क्विक रिवीजन और आखिर में हमारा स्पेशल सक्सेस मंत्रा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे हम E या G कहते हैं, उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, gm/x²। ये वो फोर्स है जो एक यूनिट मास महसूस करता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी V, ये हमेशा नेगेटिव होता है, -gm/r। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका रिलेशन, जो एग्जाम्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है, G = -dv/dr। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, स्फीयर्स एंड शेल्स। अब इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए। ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर एक टेस्ट पॉइंट P रखा गया है। शेल थ्योरम आखिर कहता क्या है? वो कहता है कि इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जैक्टली 0 होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस शेल के अंदर है तो उस पर शेल की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स फील ही नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सीधा पेपर में छपता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस कंपैरिजन को बहुत ध्यान से समझना है। एक तरफ है हॉलो शेल जहाँ इंटरनल फील्ड बिल्कुल 0 है, इसीलिए वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पर दूसरी तरफ है हमारी पृथ्वी जैसा सॉलिड स्फीयर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। सॉलिड स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ आते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड 0 से स्टार्ट होकर लीनियरली बढ़ता है। एक में कंप्लीटली 0 और दूसरे में लीनियरली इंक्रीजिंग। इन दोनों का ये बेसिक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वेरिएशन एंड करेक्शंस। अब एक्चुअल प्लैनेट फिजिक्स की बात करेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 9.832 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड कोई आम नंबर नहीं है। ये पृथ्वी के पोल्स यानी ध्रुवों पर ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू है। एग्जाम के लिए इस एग्जैक्ट वैल्यू को याद कर लीजिए। इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है पर पोल्स पर मैक्सिमम। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इसका लॉजिक समझते हैं। इन विजुअल से दोनों मेन रीजंस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। पहला रीजन है पृथ्वी का शेप। हमारी अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर थोड़ी चपटी यानी फ्लैटेंड है। इससे पोल्स का सरफेस सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा ज्यादा करीब आ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी के घूमने की वजह से इक्वेटर पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है जो ग्रेविटी के असर को प्रैक्टिकली कम कर देता है। पोल्स पर यह रोटेशन का असर बिल्कुल 0 होता है, इसीलिए वहां ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग होती है। जियोफिजिक्स में इन दो करेक्शंस का नाम बार बार आता है। इनका एग्जैक्ट डिफरेंस समझना बहुत क्रूशल है। फ्री एयर करेक्शन क्या करता है? ये सिर्फ एलिवेशन यानी ऊंचाई बढ़ने पर ग्रेविटी में आने वाली गिरावट को मैथमेटिकली फिक्स करता है। और दूसरा है बूगर करेक्शन, जो फिजिकली उस पहाड़ या चट्टान के मास यानी एक्सेस रॉक मास के ग्रेविटेशनल पुल को माइनस करता है। एक हाइट के लिए है और दूसरा मास के लिए। ये फिजिक्स एग्जाम्स का एक सुपर क्लासिक क्वेश्चन है। तो अब वक्त आ गया है सेक्शन 4 का, क्विक रिवीजन। चलिए देखते हैं अब तक के कॉन्सेप्ट्स कितने सॉलिड हुए हैं। पहला सवाल सीधा शेल थ्योरम से। एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? और इसका परफेक्ट आंसर है एग्जैक्टली 0। उस शेल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई नेट ग्रेविटेशनल बल काम नहीं करता। दूसरा सवाल इंटरनल मैकेनिक्स से। जब एक पार्टिकल एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे बिहेव करता है? जवाब है ये डिस्टेंस के साथ लीनियरली बढ़ता है। याद रखिए ये हॉलो शेल वाले केस से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह पर
किस जियोग्राफिकल लोकेशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे हाईएस्ट होती है? बिल्कुल सही। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर, जहां वैल्यू होती है 9.832, क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होता है और सेंटर ऑफ मास से दूरी सबसे कम होती है। चौथा सवाल हमारे फर्स्ट मैथमेटिकल रूल से जुड़ा है। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी G और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी V के बीच का रिलेशन क्या है? और करेक्ट रिलेशन है G = -dv/dr। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। आखिरी रैपिड फायर सवाल अप्लाइड जियोफिजिक्स से। ग्रेविटी सर्वेज में फ्री एयर करेक्शन किस स्पेसिफिक डेटा कंटामिनेशन को हटाता है? इसका सही जवाब है एलिवेशन चेंजेस के असर को। रेफरेंस लेवल से ऊपर जाने पर जो ग्रेविटी ड्रॉप होती है, ये सिर्फ उसको मैथमेटिकली करेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सक्सेस मंत्रा। ये सक्सेस मंत्रा हमेशा ध्यान में रखिए। कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशंस आर योर अल्टीमेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू सक्सेस। जैसे If you drop a 1 kilogram mass at the North Pole and a second at the equator, they won't hit the ground at the same time. At the poles, the downward acceleration measures approximately 9.832 meters per second squared. At the equator, it drops to 9.780. Despite using identical masses on the same planet, the gravitational pull is measurably different. Welcome to SR Academy 2.0. We are analyzing the mechanics behind this gravitational discrepancy today, as understanding these specific variables typically accounts for 3 to 4 marks on PGT Physics and BPSC exams. Standard textbook models that treat the planet as a static sphere fail in these scenarios. Achieving a high score requires accounting for the specific physical forces that alter the gravitational field in the real world. The gravitational field, G, is the vector force on a unit mass. Potential, V, is the scalar work to move a mass from infinity. They link directly. The field is the negative gradient of the potential. Mathematically, G equals negative dV over dr. The negative sign indicates gravity is an attractive force. Moving a mass away requires work against the field, increasing its potential. This gradient relationship bridges the gap between vector forces and scalar energy, allowing you to derive the field or potential for any complex geometry without needing to memorize a new set of rules for every scenario. We can apply this calculus by moving from a simple point mass to a three-dimensional hollow spherical shell. The shell theorem states that a uniform hollow shell exerts no net gravitational force on any object located inside its interior. Therefore, the internal gravitational field is exactly 0. Since the gravitational field is the derivative of the potential, a field of 0 means the potential must be a constant value. As the distance r changes inside the shell, the potential remains unchanged. Because there is no change in potential, the internal value is identical to the surface boundary, which is negative gm over r. In an exam setting, you can skip complex volume integration for a hollow shell by simply identifying the constant boundary condition. A more complex scenario involves finding the exact gravitational potential at a specific measurement point located deep inside a solid, uniform sphere. At an internal point, mass is distributed both below the observer, pulling toward the core, and in a shell above them, pulling in the opposite direction. To derive the total potential, we divide the sphere into 2 distinct geometries around the measurement point, as shown in this derivation diagram. First, we calculate the potential contributed by the mass of the inner solid sphere located below our point. Second, we treat the mass above the point as a series of concentric shells, integrating their contribution from our current radius to the total radius. This 2-part geometric separation is the only way to accurately integrate for the total internal potential of a solid body. Combining these 2 components results in the formula for internal potential. V equals negative gm over 2a cubed, multiplied by 3a squared minus r squared. If we test this at the surface boundary by setting r to the radius a, the equation simplifies back to the standard surface potential of negative gm over a. However, at the exact center of the sphere, where r is 0, the value changes. The formula simplifies to negative 3gm over 2a, showing the potential at the center is exactly 1.5 times the surface potential. This creates a unique condition.
the gravitational field cancels out at the Earth's core, but the center represents the absolute lowest point of gravitational potential. Moving from static spheres to the reality of geophysics, we must account for the fact that the Earth is a dynamically rotating planetary body. This rotation generates an outward centrifugal acceleration, which varies by latitude. As seen here, the radial component A sub r is oriented away from the rotation axis. This outward push directly opposes the inward pull of gravity. It is most powerful at the equator and drops to 0 at the poles. The effective gravity is represented by the formula G prime equals G minus R omega squared times cosine squared of the latitude. This explains the first part of our paradox. Standing at the equator physically throws you outward, measurably reducing your total weight. If rotation were the only factor, equatorial gravity would be weaker than what we actually observe. There is a secondary variable involved. The Earth's spin has flattened it into an oblate ellipsoid, bulging at the equator and compressed at the poles. This shape redistributes the planet's mass, placing more material between the equator and the core, which increases the gravitational pull at the equator. This chart of the GRS 1967 model shows the result of both effects. Gravity is at its lowest at the equator, latitude 0, and increases continuously as you move toward the 90-degree mark at the pole. Local gravity is determined by the outward push of the planet's rotation and the increased pull of the equatorial bulge. Let's verify your exam readiness with a quick revision test. Answer these 5 core concepts as they appear. Question 1. What is the mathematical relationship between the gravitational field and potential? Answer: E equals negative dV over dr. Question 2. What is the gravitational field value inside a uniform hollow spherical shell? Answer: 0. Question 3. What is the gravitational potential at the center of a solid sphere? Answer: negative 3 gm over 2r. Question 4. How does rotation specifically affect gravity at the equator? Answer: it makes it weaker. Question 5. If the Earth stopped spinning, what would happen to an object's weight at the equator? Answer: it would increase. Recalling these specific conditions immediately is essential for navigating the high-pressure environment of the PGT and BPSC exams. Consistent daily practice is the only way to turn these concepts into automatic knowledge. Mastering physics requires working through the derivations, rather than just relying on the final result. If this session helped clarify these principles, like the video and share it with your study groups. Subscribe to SR Academy 2.0 to catch our next physics masterclass. Keep working, and I'll see you in the next session.